Hello dear students, most welcome to all of you in this English class. Dear students, in this video we are going to study a very nice and interesting poem, Macavity the Mystery Cat. Students, it is written by famous writer T.S. Eliot. First of all, if we try to have a look at the introductory paragraph, we can see the writer or the poet is asking one question: if you are having a pet or not. If any kind of mystery have you seen about that pet or not, or it is asking some time. First of all, it is also trying to ask you if you have a cat as a pet, but whatever the cat you have, it doesn't have any mystery. If it has a mystery, it is not like a Macavity, about whom we are going to study over here. We will try to find out what kind of mystery does Macavity have. So let's read the poem and try to find out what kind of mystery does Macavity have. Macavity, a mystery cat. So students, let's start from the first stanza. Macavity is a mystery cat. He is called the hidden paw, for he is a master criminal who can defy the law. He is the bafflement of Scotland Yard, the flying squad's despair. For when they reach the scene of crime, Macavity is not there. So student, first of all, it is a hidden paw. It is called a hidden paw. That means his paw cannot be seen. Wherever it goes, it is hidden. मतलब जहाँ पे उस भी Macavities रन करती है, उसके हम निशान देख नहीं पाते. Because you know that it's a master criminal and can challenge the law. Defy means DEFY. Defy means challenge करना, चुनौती देना. ये लॉ को चुनौती दे देती है. ये एक उलझन है स्कॉटलैंड यार्ड में, स्कॉटलैंड के लिए. मतलब स्कॉटलैंड में खासकर एक वैरायटी जो मिलती है उसमें एक उलझन की तरह से है. एंड इस फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पेयर, मतलब कि जो स्क्वाड फ्लाइंग करने वाले वहां के होते हैं उनके लिए निराशा वाली बात. मतलब कि दे आर अनएबल टू कैच Macavity. बिकॉज स्टूडेंट्स, वेन एवर दे ट्राई टू रीच एट द क्राइम सीन, Macavity कैन नॉट बी सीन ओवर देयर. मतलब अगर वे क्राइम सीन पे पहुंचते हैं स्कॉटलैंड के पुलिसकर्मी, तो Macavity वहां से उड़ चुकी होती है, वहां उसे मिल नहीं सकते. नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट स्टैंजा नंबर 2. Macavity, there is no one like Macavity. He is broken every human law. He breaks the law of gravity. His power of levitation would make a fakir stare. And when you reach the scene of crime, Macavity is not there. You may seek him in the basement, you may look up in the air, but I tell you once and once again, Macavity is not there. So students, first of all, here the writer is saying that there is no cat like Macavity. It breaks every human law. It breaks also the law of gravity. मतलब जितने भी लॉ बनाए गए हैं उसको ये तोड़ देती है. जो ग्रेविटी के लॉ भी हैं, मतलब कि चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, उसे भी Macavity तोड़ देती है. His power of levitation. Levitation means to fly high in the sky. That this power, it makes a fakir also stare. That means what you know कि फकीर के अंदर जो जादुई शक्ति होती है, जिसकी वजह से किसी भी चीज को हवा में उड़ा देते हैं, तो उनके इस स्किल से एक अलग होकर के Macavity के अंदर एक ऐसा पावर है जो लेविटेशन का है, जो काफी सरप्राइज करती है. और जब कभी आप क्राइम सीन पे आप पहुंचते हो, वेन एवर यू रीच एट क्राइम सीन, वहां Macavity मिलती नहीं है. इफ यू आप उसे तहखाने में ढूंढ सकते हैं या हवा में फाइंड कर सकते हैं, लेकिन बट द राइटर वांट्स टू से यू अगेन एंड अगेन, Macavity इज नॉट देयर. Macavity इज अ जिंजर कैट. ही इज अ वेरी टॉल एंड थिन. दैट मीन्स कुछ खास क्वालिटी Macavity के अंदर है, और वो बहुत लंबी और पतली सी है. You would know him if you saw him, for his eyes are sunken in. Sunken means गले धसा हुआ. His brow is deeply lined with thought. His head is highly down. जो इसकी ब्रो होती हैं, जो भौं होती हैं, काफी गहरी से काफी लाइंड हैं वो, और मतलब लगता है ऐसा कि हमेशा कुछ न कुछ सोचती रहती. इट ऑलवेज थिंक समथिंग. और जो हेड है एक डॉम के आकार का, साइज का Macavity का मिलता है. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी वुड लाइक टू मूव towards next stanza. His coat is dusty from neglect. That means it doesn't wash its clothes. His whiskers are uncombed. Naturally, you can say, if it tries to break the human law, it has no time to make himself washed or cleaned. He sways his head from side to side with movements like a snake.
एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ asleep, he is always wide awake. अगर आप ये सोचते हैं कि ये आधी सो चुकी है मैकेविटी, लेकिन ऐसा नहीं होता, वो आधी वहाँ पे थोड़ी सी जगी होती है और अपने सर को इधर उधर वो मोमेंट के रूप में जैसे सांप वेव करता है वैसे हिलाती रहती है. नाउ स्टूडेंट, वी वुड लाइक टू मूव द लास्ट स्टैंजा. Macavity, Macavity, there is no one like Macavity, for he is a fiend in felling shape, a monster of depravity. You may meet him in the by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. So students, here it is again saying there is no one like Macavity. He is a fiend. Fiend means you can say devil, एक शैतान की तरह से shape. And a monster of depravity. Depravity means you can say corruption, kind of moral corruption. तो moral corruption में monster मतलब शैतान की तरह से, खतरनाक जानवर की तरह से. Sometimes you may see a Macavity walking in a street, and sometimes you may see walking in the field. But if in case of crime anybody trying to search, Macavity cannot be seen. So really students, we can say Macavity is like a mystery cat. So students, hope you have understood this poem about Macavity the mystery cat, and now you would like to solve question number 1, 2 and 3 of the same chapter, like working with the poem. Students, I would like to meet you next video with the next chapter. See you. Bye.